But Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil farajum. Mu'min and mu'minat, I want to offer my condolences on this fifth night of Muharram, 1443 Hijrah, the year 2021, on the suffering of the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil farajum. Before we begin, let's please recite Surah Fatiha for Marhum Tahir Mumin and for Kul Mu'min and Mu'minat. Also have a special request for Fatiha. Please recite a Fatiha for the parents of Anwar and Mariam Abbas and Munawar Abbas. Allahumma and kullu mu'min and mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajh. Ya kana wadu ya kana si ni na tarat. A couple of things, it's etiquette and highly recommended when you recite the Rood, Salawat, obviously to end it with Wajil Farajum. And it's also recommended to touch your face when you recite Salawat. So oftentimes you'll see people doing that. I try to do that as well. And it's because that's the sunnah of our Imam, and recommended to touch your face when you say Salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil farajum. Before we start our program, let's start with our intention. Ya Allah, we've been trying to search nearness to you and to increase our love and our nearness to the Ahlul Bayt. Ya Allah, please grant us this wish. Grant us nearness to you and nearness to the Ahlul Bayt. Increase our love for you and our love for the Ahlul Bayt. Ya Allah, you are expressionless, you are feelingless, you have nothing created about you, nothing changes about you. So you sent your Ahlul Bayt and you sent your beloved. So we know that their happiness is your happiness, and their love is your love, and their strength is your strength. And we ask that you allow us to understand our role in the plan and in the rules that you have for this world that began with the recognition of the Ahlul Bayt and the love for the Ahlul Bayt. On these 10 days of Muharram, this fifth day, we're almost half through the first Arsha of Muharram. Ya Allah, increase our knowledge, increase our nearness, and increase our strength, both mental, physical, and emotional. So every day we can do more and more ibadat. Every day we could reach deeper and deeper within ourselves to give more of us to you, and to allow ourselves to be more vulnerable to receive the love and acceptance of the Ahlul Bayt in our heart and in our life. Ya Allah, please accept our deeds and present our deeds to Bibi Fatima Zahra, and allow her to hold on to them till the day of judgment when we're going to need them the most. Ya Allah, please purify our thoughts, purify our intentions, and purify our actions, so our deeds, our ibadat, and our efforts are accepted by you and by Bibi Fatima Zahra. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil farajum. Couple of quick announcements. Sunday, we will have the Mehndi of Janab Qasim alayhi salam. On Monday night, we will have the Hazri and Dastar Khan for Hazrat Abbas alayhi salam, Babul Hawaij. It's a very important day to have du'as that you want to bring and have Hazrat Abbas stand in intercession to help our du'as get kabuled. So please join us for the Dastar Khan on the 8th of Muharram. The night of the 10th of Muharram, which is Wednesday night, we will have short amals, including the ziyarat, live and in person. The 7th and the 8th are live in person events that I'm urging everyone to come attend. We will have alams and the alam commemoration, matam, Dastar Khan, keeping all of our traditions. The night of Muharram, the night of Ashura, like I said, we'll have the obviously matam and ziyarat. And the morning of Ashura, our program will start at 10:30 a.m.
with the Amals. At 2:30 p.m., we will do our Julus. We will march, continue the march that Imam Hussein started from Medina to Mecca, eventually to Karbala, and Bibi Zainab continued from Karbala to Kufa to Sham, and we're going to continue this march in Los Angeles and Huntington Beach, California, and continue to march for the cause of Amr bil Maruf, Nahi anil Munkar, and the freedom of choice to choose the righteous path over the path of ignorance and tyranny. And so please join us in continuing this march of Imam Hussein, this march of Bibi Zainab on Ashura. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad waj'al farajum. Today's agenda, first we will have beautiful recitation of Hadith Qissa. After Hadith Qissa, we will have the Marsiya Salam. After that, we will have a short English speech, and followed by our main speaker will be an Urdu speech presented by Maulana Syed Abid Bilgrami Shab. We're going to be continuing. His majlis has been fantastic these first few days, and I'm really looking forward to hearing the majlis today. We're really lucky to have such a learned scholar addressing our community. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad waj'al farajum. The majlis will be followed by Matam and Ziyarat. Mu'min and Mu'minat, please requested to attend, spread the word. Watch with your family. It's very important that the togetherness in Islam, that we that we keep the traditions of togetherness and watch as a family unit and as a community. So please continue to tune in and continue to receive the benefits of Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad waj'al farajum. And now, after a loud salawat for brother Jawad, brother JZ Zahid, we want to please recite a Surah Fatiha for the marhum of the Zahid family and for Kul Mu'min wa Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad waj'al farajum. Please, after Fatiha, begin, brother. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت اللهم صل على محمد وعلى محمد وجبر. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوذي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرة ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرة ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Please recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for Kul Mu'minin Mu'minat, khususan Tahir Mu'min. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है नाना के रोजे पर सुगरा छुप के रोती है आने वाले भाई का रास्ता तकती है बीमार बहन आने वाले भाई का रास्ता तकती है बीमार बहन भाई की मजबूर जवानी बरछी खाए सोती है किसका रोना कैसे आंसू अशर के दिन असर के बाद किसका रोना कैसे आंसू अशर के दिन असर के बाद सुगरा अपने रुखसारों से
गर्द यतीमी धोती है, बाप के सीने पर सोती थी, वो भी एक जमाना था। बाप के सीने पर सोती थी, वो भी एक जमाना था। एक जमाना ये है सकीना, खाक के ऊपर सोती है। अकबर की शादी की तमन्ना, हाय मुकद्दर सुगरा का। सहरे की लड़ियां तो नहीं, अश्कों के बाल रोती है। और जिसने उम्मत की राहों में फर्श बिछाया फूलों का, जिसने उम्मत की राहों में फर्श बिछाया फूलों का, उम्मत उसके बीमारों की राह में कांटे बोती है। परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है। नाना के रोजे पर सुगरा चुप के रोती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ahsant, brother JZ, always bringing the heat, mashallah. पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहम। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, हो के रुखसत जो चले घर से शहे कर बो बला, वाह हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा, कह के ये दौड़ी सकीना के ठहर जाओ जरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, शहन बच्ची का जो ये हाल
परेशान देखा, रो के रुखसत रो के फरमाया कि क्या हाल मेरी माए लका, जोड़ कर नन्हे से हाथों को सकीना ने कहा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे ना मुझे, गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे। वहम आती है मेरे दिल में न जाने क्या क्या, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। बाबा सीने से सकीना को लगाते जाओ, अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ। तुमको अकबर की कसम गुंशे दहन का सदका, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। अब मैं प्यासी हूं, न पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं, बस इतनी सी हसरत है मुझे। देख लूं फिर से जी भर के तुम्हारा चेहरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। सलावत। اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Oh Allah, oh my dear Lord, I couldn't see you with my eyes, so you allowed me to feel you with my soul. I couldn't praise you with my words, so you allowed me to submit to you with my actions. I couldn't hear you with my ears, so you allowed me to hear you with my heart. I am unappreciative of your bounties, so you created dua, and you taught me how to implore you, Allah. I was unworthy of your love and undeserving of your forgiveness, so you taught me about your beloved. You taught me about the Panjatan Panch. You taught me about your 14 infallibles, and you instructed them to teach us about their intercession. I am weak in my dedication, Allah. So you allowed them, your beloved, to stand between me and you,
me and your unmatched might, and plead the case for redemption, present you with my desires, and beg of you to provide me with the bounties from your never-ending kingdom. Ya Allah, please increase my blessings. Please decrease my sins and forgive my wrongdoings. I beg of you, my Lord, my creator, my protector, the expediter of everything. Ya Allah, please expedite your blessings and expedite your mercy, but not just any blessings and not just any mercy. Ya Allah, we want those blessings, we want that mercy. When on our behalf, you shower blessings on Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Imam Hussein, the flesh and the blood of the beloved of Allah, the grandson of the Prophet of God, the son of the Lion of God. He stood there in the heat, the hunger pains, the thirst that he felt, they were beloved to him. They were beloved to him because they were accepted by his Lord. They were accepted by he who he loved more than anything. And Imam Hussein loved Allah more than anyone could ever love anything. The Almighty had given Imam Hussein, he had given Imam Hussein even more opportunities to demonstrate his unwavering, unmatched love and affection for he who is the only thing deserving of all praise. It is he who created the heaven and the earth. He was so in love with his God that he was starved for 3 days, and he happily gave more in the way of the Lord, happily gave more in the way of the Lord. He'd been negotiating with Umar bin Saad. Umar bin Saad, the general of the army of Yazid. Umar bin Saad had come to Karbala, hoping to leave with Imam Hussein's allegiance instead of with his head. But the negotiations had ended. And how did Umar bin Saad let Imam Hussein know the negotiations had ended? He let him know by shooting the first arrow at the blessed camp of Imam Hussein. May Allah send his curses on Umar bin Saad. Imam Hussein, he looked back at his faithful. He looked back at his faithful, the ones protecting and standing between the enemy and his beloved children, his beloved women, the kids who would soon be orphans, the women who would be without their brothers, without their protectors. He looked back and what did he saw? He saw 32 cavalry who would be fighting on the horses. He saw 40 foot soldiers of the infantry, a total of 72 men total. And Imam Hussein had positioned them perfectly. On the right flank was commanded by Zubair ibn Qayn. On the left flank was commanded by no other than Abid ibn Mazahir. And at the heart, at the center of this faction was Imam Hussein. And the standard bearer at the time of Karbala, at the time of the Arabian Wars, the standard bearer was such an important position in the war for the strongest warrior, the strongest protector were to hold the flag, were to bear the flag. And so it only made sense that the flag bearer should be no other than the son of the Lion of God, the Lion of Qamar Bani Hashim, Hazrat Abbas alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. For he knew that as long as this flag stood tall, as long as this flag stood tall, Hazrat Abbas was there to protect Imam Hussein, to protect Bibi Sakina, to protect Kulthum, to protect Bibi Zainab. He stood there behind him, 72 men, and in front of him, thousands of soldiers. Some say 20,000, some say up to 100,000 soldiers. They just kept coming and coming and coming. They showed up with 1,000 soldiers of Hur's army, 1,000 soldiers of Hur's faction, walking side by side with the caravan of Imam Hussein. They were greeted by 4,000 more soldiers waiting for him when he arrived in Karbala. Why were there so many soldiers for such a small faction of people? Why? Because the general of the army who reported directly to Yazid, he was a man named Ubaydullah ibn Ziyad. Ibn Ziyad, may Allah send curses on him. He was known for being ruthless in quashing rebellion. Whenever there was a faction of people who would stand up against Yazid, Umar bin Saad would show up with no mercy, with taking no prisoners, with more than that was necessary, put an end to any opposition to Yazid. So knowing that there were less than 100 soldiers ready, knowing that the camp of Imam Hussein, the caravan of Imam Hussein was mostly elderly, and it was mostly women and mostly children. He showed up with thousands of soldiers, and they kept coming, thousands and thousands of soldiers. Ibn Ziyad was the tyrannical governor of Basra at the time, and he was appointed governor of Kufa in furtherance of the assassination plan of the cousin of Imam Hussein, Hazrat Muslim bin Aqil alayhi salam. To the right flank of Yazid's army was Umar bin Hajjaj. Umar bin Hajjaj was a man
who lived in Kufa. He was a high-ranking politician in Kufa, a man who sat down with the elders of Kufa and wrote to Imam Hussein and begged him, "Oh, our Imam, come to Kufa. Come to Kufa. We need your guidance." One of these letters was from Umar bin Hajjaj, but now he stood there with 1,000 soldiers on the right flank of Yazid's army. It was he who stopped Imam Hussein and his followers from getting water from the 7th of Muharram. That is the man who was on the right flank of Yazid's army. On the left flank was Shimr bin Joshan. Shimr bin Joshan was the brother of no other than al-Banin, the brother of no other than the mother of sons, the brother of no other than the second wife of Hazrat Ali ibn Abi Talib. Her brother was Shimr bin Joshan. Her brother was the man who cut off the head of the Imam. He was the man who wanted to kill Zain al-Abidin, and if it weren't for his higher-ranking officer, Umar bin Saad, rejecting that offer, maybe he would have completed his mission. And the flag bearer of Yazid's army was Umar bin Saad. Yes, he went to Karbala hoping to negotiate, hoping to leave with Imam Hussein salam's allegiance instead of with his death. But it was also he who shot the first arrow towards the camp of the Imam. It was he who ordered the bodies to be trampled after they had been shaheed. That is the man of Umar bin Saad. This army was commanded by Ibn Ziyad. And Ibn Ziyad reported to no other than the Umayyad Khalifa, Yazid. Yazid was the son of Muawiyah. Muawiyah was the son of Abu Sufyan. We discussed yesterday how Abu Sufyan was a man who was outwardly jealous of Prophet Muhammad. See, when Allah creates something, he creates it in balance. With night, there's day. With good, there's evil. And this is true of piety too. When there's piety and when there's faith, the antithesis is jealousy. So whenever you have two people, as you could see, when there was Adam and Shaitan, Adam was pious and Shaitan was jealous. When there was Bibi Hawa and Hazrat Adam, Bibi Hawa felt insecure from Adam's piety, when there was
Muhammad wa ali Muhammad waj'al farajahum. Oh, crack that back door. Due to some technical difficulties, please forgive me if I repeat a little bit of my deliverance of my speech today. I want to make sure that we get all the information. I promised I would go over the history leading up to the tragedy of Karbala. And so if I backtrack a little bit due to technical difficulties, please forgive me. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al farajahum. We were discussing how Yazid was the Khalifa and his army was led by Ubaydullah ibn Ziyad was his direct report. Underneath him was Umar bin Saad, who shot the first arrow towards Imam Hussein's camp. And on the right flank of his army was Umar bin Hijaj, who had written letters inviting Imam Hussein to come to Kufa and now was turned against him in Karbala. On the left flank was Shimr bin Joshan, who was the maternal uncle of Hazrat Abbas alayhi salam. He was the brother of al-Banin, and it was he who cut the head of Imam Hussein off. And then the flag bearer of the army of Yazid was Umar bin Saad, who was the man who not only shot the first arrow towards the camp of Imam Hussein, but it was he who came up with the horrible idea to trample the bodies of the martyrs after the tragedy of Ashura. May Allah send curses on Umar bin Saad. May Allah send curses on Shimr. May Allah send curses on all of these personalities. And the army, as we know, was Yazid's army. Yazid was the son of Muawiyah and the grandson of Abu Sufyan. Abu Sufyan was a man who opposed the Prophet because of jealousy that is created as the opposite of piety and of faith. If those who are weak in their faith are jealous of those who have piety and faith, and that was shown not just in the beginning of time with Shaitan and Hazrat Adam, not just with Habil and Qabil, not just with Hazrat Musa and Pharaoh, but also here with Abu Sufyan and with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al farajahum. See, polytheism was a great business in Makkah. It was a great business in Makkah that created no natural resources. So the merchants would take advantage of the pilgrims coming to visit their many gods and their many idols in the house of God, in the Kaaba. And so when Prophet Muhammad came and taught people about civility, about fair business dealings, and about the oneness of God, making the Kaaba uninhabitable for idols, this merchant trade, this cash grab that Abu Sufyan had been so used to, that the Umayyad clan had been making wealth for generations on, was being threatened. Abu Sufyan had then gotten the other tribes of Quraysh to oppose Prophet Muhammad, and he did a trade ban against trading with Prophet Muhammad and anybody who supported him. And on the very house of God that his successor Hazrat Ali alayhi salam was born in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al farajahum. This man, may Allah send curses on Abu Sufyan. He put the trade ban, he put the rules of not trading with Prophet Muhammad and hammered them to the walls of the Kaaba. And it was he who incited the Battle of Badr when the Quraysh tried to defeat Prophet Muhammad, but the Muslim army had destroyed them. It was Abu Sufyan who was the commander of the Quraysh army at the Battle of Uhud that was trying to avenge the Battle of Badr. This is the war. This is the war when Hazrat Hamza was killed and his body was mutilated. And this is the war when the very wife of Abu Sufyan, Hind, had taken the liver and chewed on the liver of Hazrat Hamza. May Allah send curses on them. And it was Abu Sufyan in the battle of Khandaq who had incited the neighboring tribes to join the Quraysh and wage war against the Muslims. It was Abu Sufyan who had instigated the Jews to take arms against the Muslims in the Battle of Khaybar. That is who Abu Sufyan was. And yes, he did join Islam when the Prophet moved and migrated to Medina. But even then, he was always instigating controversy. He was often found cursing the Prophet during Azan and saying, you see, my cousin's name is still in the Azan, And he would curse the Prophet. And he would look at the Prophet in the early days of Islam, and he would say, look at the army that my cousin is putting together. Instead of seeing them as followers, he saw them as
army. He saw them as something that he could use, and he was very envious and wanted to control this army. He wanted to control the followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad waj'al farajumna. Abu Sufyan, being a merchant, being a businessman, traded in Makkah and in the surrounding towns. He also traded in Syria, and his relationship with the business market in Syria was what allowed him to have his son Muawiyah raised to be governor of Syria. See, Muawiyah was the son of Abu Sufyan. He too was of the Umayyad clan. The Umayyad clan, as we know, there were two brothers of Shams and Hisham, and they were born as conjoined twins. And when they were separated at birth with the knife, people had said that that is going to cause discontention between these two brothers, and that discontention continued on for generations. And now Muawiyah was leading in the ranks. You see, after Prophet Muhammad had died, the Muslim leadership, right, the Muslim leadership of Abu Bakr and Umar and Uthman had taken the message of Islam, the mission of Islam, and tried to profit on it. Prophet Muhammad would welcome neighboring towns, neighboring countries to join Islam and join the Muslim nation. But the armies of Abu Bakr and Umar and Uthman, and now were led by personalities and generals such as Muawiyah, who would plunder the nearby lands and take their wealth and make it part of the Muslim nation. This was not the message of the Prophet, but this was the direction that the Islamic nation was going into with the leadership of the Caliphate, right? And so Muawiyah had raised in the ranks by being a general, by being a vicious general who helped sack the Byzantine Empire, who helped sack many of the neighboring lands and take their wealth and make it part of the Islamic nation. And so he had the allegiance of Syria. He had the allegiance of many of the neighboring places. After Uthman died, he claimed the right to the Caliphate, even though it was given to Hazrat Ali alayhi salam. Even though Hazrat Ali was the true leader of Islam, the true successor of Prophet Muhammad. Uthman, after he had passed, Muawiyah had made a claim and said, since I am of the Umayyad dynasty, you see, when Prophet Muhammad tried to appoint Hazrat Ali, they said, you're not allowed to appoint your successor within your family, which had been done from the beginning time when Hazrat Adam had appointed a successor, when Hazrat Musa had presented Hazrat Harun as a successor, and to be continued when Prophet Muhammad had designated Hazrat Ali to be a successor. But at the time, they said it can't be appointed within your family. But now, because Muawiyah was the relative of the Umayyad clan, relative of Uthman, he made a claim towards Caliphate. What did Abu Sufyan say? He said, now that the Caliphate is in our hands, in the Umayyad's hands with the Caliphate of Uthman, let's toss it around like a ball within our family and never let it drop. This is what Abu Sufyan said. And this is what Muawiyah tried to do. Muawiyah raised to the ranks of governorship of Syria, and he claimed Caliphate against Hazrat Ali's Caliphate. You see, Muawiyah was not a man who wanted to be a spiritual leader. No, he wanted to be a militant leader. He was the type of man who would ride a horse between Safa and Marwa, which is strictly prohibited to do, but he would do it openly. He was a man who had such control over the army, was unopposed by his army men, that he went and held Jummah namaz on a Wednesday and nobody stood up and said anything. This is a man who liked to drink. This is a man who liked music. And this is a man who now was making a claim to be the Khalifa of the Muslim nation. And after the assassination of Hazrat Ali alayhi salam, he was opposing Imam Hassan alayhi salam, who was the next Khalifa. And Imam Hassan alayhi salam, in a very intelligent, in a very forward-thinking treaty, had separated Imamate from Caliphate. He separated Islamic's temporal from the spiritual leadership. And he said, even if you claim Khalifa, you will never be the spiritual leader, because that is only designated by Allah. And I am the spiritual leader, is what Imam Hassan said. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad waj'al farajum. Also in the treaty, it was designated and agreed upon by Muawiyah that he would not appoint his successor once he died. The people would elect the successor, and it would not be appointed by Muawiyah, and that the lovers of Hazrat Ali alayhi salam would not be disparaged and would not be attacked. But Muawiyah, in his arrogance, in his audacity, outwardly violated this treaty
violated this treaty by oppressing the lovers of Hazrat Ali alayhi salam, violated this treaty by appointing his successor. His successor was his son Yazid, a young man of 36 years old. He appointed to be Khalifa of the Islamic nation, instead of the true king, Imam Hussein alayhi salam. And who is Yazid? As I said, Yazid was the son of Muawiyah, the grandson of Abu Sufyan. Abu Sufyan was the one whose wife had chewed the liver of Hazrat Hamza. And Yazid was his descendant from his father's side. And from his mother's side, Yazid's mother was a Syrian Christian. And Yazid was not only the child of a Syrian Christian, he grew up in the Christian community. He did not grow up around Muslims. He did not grow up praying namaz. He didn't know the rules of Islam. And frankly, he didn't care for them. He knew Imam Hussein to the extent that he knew that no matter what Yazid did, people didn't love him the way they loved Imam Hussein. They didn't respect him the way they respected Imam Hussein. They didn't follow him the way that they followed Imam Hussein. Yazid tried everything he could. He threw lavish parties with drinking, with gambling, with music all night long, and invited people to come and celebrate with him. And even though he invited people to haram and gave them worldly experiences and worldly, what he thought were worldly benefits, people still followed Imam Hussein. People still flocked to Imam Hussein, and people still said that Imam Hussein was the true leader. And Yazid was very jealous. Like I said, where there's piety, there's jealousy. And the Umayyads and the Banu Hashim had a history of jealousy dating back to their conjoined twin brothers that founded the two clans. And this jealousy followed down to Yazid and Imam Hussein. Now, when Muawiyah died and he appointed Yazid as Khalifa, Yazid had talked to Walid, the governor of Medina, and he told Walid to have Imam Hussein come visit him. And he wanted to let him know that Yazid wanted his bayat, wanted his allegiance. So the Imam went to go meet Walid. And what did he saw? He saw Marwan was there also. And when he approached, he was asked to keep his brothers, to keep his cousins outside. So Hazrat Abbas and Habib ibn Madayr and Zubair ibn Kain waited outside. And Imam Hussein walked into the quarters of Walid and saw Marwan there. And Walid told Imam Hussein that Muawiyah had passed away and had appointed Yazid as a successor, and Yazid wanted his allegiance. And Imam Hussein, he said, such a big step, I shouldn't take it in private. I should announce where my allegiance is in front of everybody. Don't you agree? And Walid said, yes, I agree. He said, let me come tomorrow in front of everybody and I will announce my allegiance, and to whom I will give allegiance in front of everybody. And Walid said that this is fine. All of a sudden, Marwan, may Allah curse Marwan. He stood up and he said, if you let Hussein go now, you will never be able to catch him without bloodshed. You'll never be able to catch him without bloodshed. It's better if you keep him here now and take his allegiance or cut his head. And to that, Imam Hussein rose and he looked at Marwan and he said, you are the son of a bastard. I am the son of Fatima. He said, a man like me will never give allegiance to a man like Yazid. And upon hearing this from outside, Hazrat Abbas and Habib ibn Mazar and Zubair ibn Kain, they rushed to the quarters of Walid, they rushed to the quarters of the governor, and they escorted Imam Hussein out of the quarters and back to his camp safely. And Marwan told Walid, he said, you should have kept him here because now we will never catch Hussein. So the next day, Walid had gone to Imam Hussein and he had asked him for his allegiance. And Imam Hussein, he said that and it was the day was Saturday on the 28th of Rajab, 60 AH, 60 after Hijri. And Imam Hussein told him, he said, let this night pass, and tomorrow I will announce my allegiance. And tomorrow I will announce my allegiance. And Walid had allowed it. And during this night is the night when Imam Hussein, he left Medina with his wives, with his brothers, and with the most respected members of his family. And he proceeded in a journey from Medina to Makkah. And as he was leaving, there was a small girl in the house of Imam Hussein who was sick, and she called her father. She called her father to talk to him, and when he entered the room, she sat up. She was a 7-year-old girl. She sat up and she tried to look healthy, and she tried to look like she was not sick to convince her father that she wasn't sick, and so she could come with him on the journey. She had just been taking care of her young brother, Hazrat al-Asr. She had not yet seen him sit up. She had not yet heard him talk, but she loved him so much and she didn't want to leave him, and she knew that he wouldn't want to leave her. And so she begged her father, and her father said, you were too sick to travel and you need to watch Salma and you need to watch Banin. And so she accepted it.
She accepted it because her father had told her this is how it was. And then she called for Hazrat Abbas alayhi salam, and Hazrat Ali Akbar alayhi salam, her uncle and her brother had come to see her, and she complained to them. And she said, how can you guys leave without me? How can you guys leave without me? She told Hazrat Ali Akbar alayhi salam, she's, oh, you were going to marry without me there. I know you're going to marry without me there. She turned to Hazrat Abbas alayhi salam, and she said, you guys are going to leave me, and I'm going to die, and nobody's ever going to come and visit me at my grave. Little did she know what was to happen. This little girl was so sad. Imam Hussein came in and he promised her that I will, we have to leave, but I will look at you and I will wave to you the whole way until you can't see me anymore. And so the caravan started to walk. They started to walk, women and children, the elderly, the Imam and his sons, they started to walk away from the home that they had known, the home of Medina, walking towards Makkah. And Imam Hussein kept looking back and smiling and waving at his 7-year-old daughter, Hazrat Ali Akbar and Hazrat Abbas dare not turn around because they didn't want to show Bibi Sughra the tears in their eyes. So they kept looking forward. And Imam Hussein walked for as long as he could not see his daughter anymore. And then he walked a little bit longer and he had the whole caravan pulled to the side. And stopped. And Imam Hussein put his hands in his hands and he wept because he was leaving his daughter Sughra. How could he bring this girl who looked like his mother, Bibi Fatima? How can he bring this girl with the face of Fatima to see her hijab taken away? Allah would not be able to stand this. Imam Hussein would not be able to stand this. So Bibi Sughra had to stay back in Medina. And Imam Hussein, he wept and he wept. This reminds me of the day of Ashura when all of the women were going to their sons and they were getting their sons ready and talking to them about how their responsibility is to protect the imamat. And then there was a room with Bibi Zainab and her 2 sons, Ona Muhammad. They were the grandchildren of Hazrat Ali, the grandchildren of Hazrat Jafar at-Tayyar, and she told them about the wars that Hazrat Ali fought, the wars that Hazrat Jafar at-Tayyar fought, to give them courage, to let them know their family lineage, to let them know what their responsibility was. And Bibi Zainab watched all day while the sons of Ali were assassinated, while the sons of Hussein were assassinated, the cousins of Hussein, everybody who had left to defend Islam had not come back. The boys, the men, the elderly, and Bibi Zainab watched, and she looked and she saw her sons. And she said, my sons, how are you still alive when there's so many people sacrificing their lives for Islam? And then they told her, they said, mother, every time we go to our uncle, he doesn't acknowledge us, he won't let us go. And she went to Imam Hussein. Bibi Zainab went to Imam Hussein and she said, my brother, how can it be that your sons are going to give their lives and my sons are still standing? How can I face our mother, the Lady of Light, Bibi Fatima, and say that the sons of Hussein were martyred while my sons lived? So Imam Hussein, he had given them permission. To go and seal their fate and earn their ticket to Jannah. And so Bibi Zainab had proudly gotten them ready, reminded them of their lineage of Jafar at-Tayyar, reminded them of the lineage of the line of God. And these two young boys went out to face the savages, the mercenaries, the trained killers with their swords dripping of the blood of their loved ones. And they came up and they stood back to back. Fighting off the enemies with such precision, such decision making. What swordsmanship! This kind of junk could only be fought by boys who were taught by no other than the line of Qamar bin Hashim. Yes, they were disciples of Hazrat Abbas alayhi salam on how to work the sword. They were disciples of Hazrat Abbas alayhi salam on how to strike your enemy. They were the disciples of Hazrat Abbas alayhi salam, and he proudly watched on. He proudly looked on and he watched as they defeated hundreds and hundreds of soldiers, these young boys. Umar bin Saad called out. He said, you'll never defeat these boys until you separate them. So the armies got between the 2 boys and separated the boys. They shot them with arrows. They shot them with spears. The boys fell to the ground. Ya Abbas, our Uncle Abbas, come help us. Hazrat Abbas and Imam Hussein had gone and carried the bodies of Ono Muhammad back to the camp, to show their mother, Bibi Zainab, that her sadaqah had been accepted, that these boys had loved they loved their Imam so much, they loved their God so much, and Bibi Zainab loved Allah so much
loved Allah so much that when Yazid asked her, what do you think of your God now after what I did to your brother and your family? Bibi Zainab said, everything Allah does is perfection. Everything Allah does is perfection. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Farajum. Please recite Surah Fatiha for Kul Mu'min and Mu'minat. Next up, we have our main speaker, Maulana Syed Abid Bilgrami Shab from Hyderabad, India. After loud salawat, let's please recite a Surah Fatiha for the marhum of Maulana Syed Abid Bilgrami Shab, for the marhum of his family, and for Kul Mu'min and Mu'minat. Allahumma sallallahu Muhammad wa ala sallallahu. Allahumma sallallahu wa ala. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूब रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला मज़लूम करबला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हल मिन नासिरिन यंसुरना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ादारान इमाम अल-असर इमाम बारगाह लॉस एंजलिस की ये 4th मजलिस है, 4थी मजलिस है जो मौला हुसैन के इस इरशाद पे हो रही। 1443 हिजरा 2021 की 4थी मजलिस अल-असर इमाम बारगाह लॉस एंजलिस। इमाम हुसैन का ये इरशाद कि हल मिन नासिरिन यंसुरना, कि कोई है जो मेरी मदद करे। इमाम ने हमसे मदद मांगी है, हेल्प मांगी है। एटलीस्ट ये अय्याम अज़ा में हमारे जहन में, बैक ऑफ आवर माइंड, सुबह से शाम तक एक चीज़ रहना कि इमाम ने हमसे हेल्प मांगी है। एंड हाउ कैन वी हेल्प इमाम? तुम ये सोचो, हाउ कैन वी हेल्प इमाम? इसलिए कि मैं बार बार कह रहा पहली मजलिस से कि दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, इस्लाम पे अमल करना ये इमाम की मदद है। नुसरत इमाम अफजल तरीन इबादत। नुसरत इमाम के लिए कोई 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 शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं। कंडीशन बस ये है कि फॉलो द रिलीजन, फॉलो द रिलीजन, फॉलो द पाथ ऑफ इमाम हुसैन। ये सबसे बड़ा कंडीशन है। इस कंडीशन पे अगर इंसान उतर जाता है तो वह एटलीस्ट हेल्प करेगा। और हेल्प कब से स्टार्ट करेगा, कब होगी हेल्प? डे टू डे लाइफ में भी होगी। और अगर इमाम ने तुम्हारी हेल्प को एक्सेप्ट किया तो इंशाअल्लाह आपको पता है कि मौला हुसैन वापस आएंगे। लेकिन कब आएंगे वापस? ज़ुहूर इमाम के बाद। जब तक इमाम का ज़ुहूर नहीं होता हमको ये मौका नहीं मिलेगा। लिटरली, फिज़िकली वी आर गोइंग टू गेट ए चांस। फिज़िकली वी आर गोइंग टू गेट ए चांस टू जॉइन द आर्मी ऑफ इमाम हुसैन। आप नहीं चाहते कि मौला हुसैन के लश्कर में हम शामिल हो जाएं। इससे बड़ा हमारे लिए ऑनर क्या है? इससे बड़ी हमारे लिए बात क्या है कि मैं इमाम हुसैन के लश्कर को ज्वाइन करूं? और सबको मौका मिलेगा। एवरीबडी इज़ गोइंग टू गेट, जो इमाम की सीरत पे अमल करेगा इंशाल्लाह। इसके लिए कई दुआएं हैं। आज मैं आपको एक दुआ बताता कि आखिर ज़माने में इंशाल्लाह ज़ुहूर के बाद हर इंसान को, हर इमाम के चाहने वाले को एक चांस मिलने वाला है। इसीलिए ज़ियारत वारिसा में इमाम ने एक जुमला रखा शुहदाए करबला की ज़ियारत में कि फ़या लैतनी कुन्तो माकुम फाफुज़ा माकुम। इसका मतलब क्या है कि काश हम करबला में होते तो हम मौला हुसैन को की मदद करते। ये एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? कि काश हम होते, अगर होते तो हम इमाम की मदद करते। तो दोस्तों, अब यहाँ पे छठे इमाम का इरशाद है कि अगर पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ, होल योर लाइफ, 60, 70, 80, 90 ईयर्स की ज़िंदगी में अगर कोई एक मरतबा भी कहेगा, जस्ट वन टाइम, काश मैं करबला में होता, फ़याल तनी कुन्तो माँ को, तो कहा उसको वो मर भी गया। उसके बाद जब मेरे बेटे का इंशाल्लाह ज़ुहूर होगा तो ज़ुहूर के वक्त उसको उठाया जाएगा। तो सबसे पहले अब जो दुआ करना है ना, वो ज़ुहूर है, इमाम की दुआ करना है।
जो अफजल तरीन दुआओं में से एक दुआ है। हर वक्त हमेशा इसीलिए कहा कि जब भी तुम सलवात पढ़ो वह अज्जिल फ़रजहुम के साथ पढ़ो। तो मिसाल के तौर पे तुम 100 मरतबा सलवात पढ़ रहे दिन भर में, होल डे में, जो बेहतरीन अमल है। सलवात एक ऐसा अमल है कि तुम 24 घंटे पढ़ सकते। तुम लेटे हुए तुम सलवात पढ़ सकते, तुम कार ड्राइव कर रहे सलवात पढ़ सकते, तुम चल रहे सलवात पढ़ सकते, वॉक कर रहे तुम सलवात पढ़ सकते। सलवात ही एक ऐसा इबादत है कि जो 24/7 तुम कर सकते। और इस पर टोटल रहमत खुदा, अगर इंसान खुदा न खास्ता परेशानियों में है, बीमार है, फीवर आ गया, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हो, अगर वो सलवात पढ़ता रहे तो रहमत खुदा शुरू हो जाती है आना। इसलिए कि इसमें आप क्या बोल रहे हैं सलवात में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलवात कंप्लीट हो गई। वह अज्जिल फ़रजहुम, वो दुआ है कि अल्लाह तो मेरे मौला के ज़ुहूर में ताजील कर, जल्दी कर, फास्ट कर। वह अज्जिल फ़रजहुम तो लाजिम बोलना, देखिए कोई मस्ट नहीं है, बट ये तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशनशिप इमाम से बनता। और ग़ैबत इमाम में, ये हायर ओकल्टेशन में ये इतना ज़रूरी है कि इमाम के ज़ुहूर की दुआ अफजल तरीन दुआओं में से एक दुआ बताई गई। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद है कि अफजल तरीन इबादत इंतज़ार फ़र्ज है। इमाम बोलते हैं कि अफजल तरीन इबादत इंतज़ार फ़र्ज। इमाम का इंतज़ार करो और इस ज़ुहूर की दुआ करो। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शिया इन हायर ओकल्टेशन कि वी हैव टू वेट फॉर आवर इमाम। और इमाम के ज़ुहूर की दुआ में आसान तरीन दुआ जो है सलवात है, और उसके साथ वह अज्जल फ़रज हो कि मतलब आप जब सलवात पढ़ रहे हैं, इवन नमाज में, खुनूत में, रुकू में, सजदे में, जब आप सलवात पढ़ते अब वह अज्जल फ़रज हम के साथ पढ़ना। उसके बाद मजलिस में वह अज्जल, अगर आप ईरान इराक़ में जाए, आप माशाल्लाह आप लोग ज़ियारत पे जाते, अल्लाह हम बार बार मौला हुसैन की मासूमीन की ज़ियारत को जाए। जब आप ज़ियारत पे जाते तो आप देखते कि वहाँ पे कसरत से अरब और अजम, इतनी कसरत से वह अज्जल फ़रज हम, उनकी औरतें भी और उनके मर्द भी, वह अज्जल फ़रज हम के साथ इमाम का एक रिश्ता कैसे बनता। अब आपको मैं एक थोड़ा सा तरीक़े से समझाता। सलवात जो है, सलवात में क्या बोल रहे हैं आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलवात कंप्लीट हो गई। सलवात में आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाज़िल कर। यही है ना सलवात के ट्रांसलेशन, कि यू आर प्रेइंग फॉर टू अल्लाह कि अल्लाह तो ब्लेसिंग, अपनी रहमत तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर नाजिल कर। जब तुम सलवात पढ़ते तो दुनिया का दस्तूर क्या है, लॉस एंजलिस में अगर कोई आपसे मुलाकात करे, कोई इमाम, जैसा मजलिस में आप अल-असर इमाम बारगाह आ रहे, आपको कोई बोले कि अल्लाह तुमको सलामत रखे, अल्लाह तुम पे रहमत नाजिल करे, तो व्हाट यू डू, आप भी पलट के उसको बोलते कि अल्लाह तुम पे भी रहमत नाजिल करे। ये एक दुनिया का दस्तूर है, ये एक एटिकेट है कि अगर कोई तुम्हारे लिए दुआ करता तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि तुम भी उसके लिए दुआ करो। यही दुआ करो कि अल्लाह इस पे रहमत को नाजिल कर, अल्लाह इस पर रहमत को नाजिल। ये बेहतरीन दुआओं में से एक दुआ है, बेहतरीन दुआओं में से एक दुआ है कि जब आप दूसरों के लिए दुआ करते तो वो भी तुम्हारे लिए दुआ करता। तो अब आप ये बोलो कि जब हम इस तरह दुआ कर रहे, तो अगर आपने 10 मरतबा, 20 मरतबा, 100 मरतबा सलवात पढ़ी कि अल्लाह तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत को नाजिल कर, अगर इमाम अली एक दफ़ा बोल दे कि अल्लाह इस पर भी रहमत को नाजिल करे, तो दिन भर में तुम्हारे साथ इमाम अली की दुआ साथ रहेगी। मैं मिसाल दे रहा आपको कि आपने दुआ की, रहमत की, मौला ने भी आपके लिए रहमत की दुआ की। मेरी दुआ कबूल हो या ना हो, इमाम अली, अगर इमाम अली बोल दे कि इस पर रहमत नाजिल करे तो 200% इसके ऊपर रहमत है, 200% इसके ऊपर रहमत है। अगर मौला बोल दे कि अल्लाह इस पर रहमत नाजिल करे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सलवात तुम कसरत से सलवात पढ़ो, 24/7 सलवात पढ़ते रहो। आप वज़ू से नहीं भी है तो आप सलवात पढ़ सकते हैं, अगर वज़ू से रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वज़ू से नहीं भी है तो कोशिश करो कि 24/7 तुम्हारी ज़बान पे सलवात। मैं जानता हूँ कि सलवात पढ़ने वाले वो कभी परेशानियों में नहीं आते,
कभी तकलीफ़ों में नहीं आते। आप दिन कार ड्राइव कर रहे, बहुत बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम, यही पढ़ते रहो। अब मैं सलवात पे रहमत कैसे आती, अब मैं आपको तारीख़ का एक बड़ा मशहूर वाक़या बताता। अल्लाह के रसूल हमारे प्रॉफिट सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, जब मेराज पे गए थे, मेराज सब जानते हैं, 26 रजब 26 रजब की रात अल्लाह का रसूल मक्के से मेराज पे गया था, जो आसमानों में गए थे। तो जब हर उसकी डिटेल है, मैं मेराज की डिटेल नहीं पढ़ रहा, मैं खाली आपको बता रहा कि सलवात की फ़जीलत क्या है। सलवात की फ़जीलत अगर हमको पता चल जाए तो आप 24/7 एक दिन भर में सिर्फ सलवात पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ये वाक़या सुनो, उसके बाद देखो। आप अल्लाह का रसूल मेराज पे गया, मेराज पे एक एक आसमान से होते हुए तो फर्स्ट स्काई, सेकंड, थर्ड, जब फोर्थ स्काई के ऊपर पहुँचे, फोर्थ स्काई के ऊपर, तो वहाँ पे कई लोगों से मुलाकात हुई। नबी ईसा के साथ वहीं पे मुलाकात हुई, इसलिए कि ज़िंदा नबियों में नबी ईसा जो है मौजूद है और वो चौथे आसमान के ऊपर है। नबी ईसा से मुलाकात हुई और बड़े बड़े नबियों से मुलाकात हुई, और वहाँ पे जनाब अल्लाह के रसूल ने नमाज भी पढ़ाई। कहाँ पे? फोर्थ स्काई पे मलाइका को जनाब ईसा सब ने नमाज़ पढ़ी। वहीं पे आपकी मुलाकात मलकुल मौत से भी हुई। मैं मलकुल मौत को नहीं छेड़ रहा, मलकुल मौत से भी अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई। वहाँ पे अल्लाह के रसूल ने मलकुल मौत से एक सवाल किया था और उसने जवाब दिया था। वेरी इंटरेस्टिंग है वो, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको बताऊँगा। एक टाइप का इंटरव्यू समझे आप, किसका? अल्लाह के रसूल ने मलकुल मौत से उसका एक्सपीरियंस पूछा, उसके बारे में पूछा, उसने क्या क्या किया, तो उसने बहुत अच्छा खूबसूरत जवाब दिया था। इंशाल्लाह वो मौका मिला तो बताऊंगा। उसी तरह अल्लाह का रसूल जिब्राइल के साथ जा रहे थे, फोर्थ स्काई से जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक एंजिल से हुई। एक एंजिल कैसा था? ये एंजिल कैसा था? ये एंजिल्स बड़ा ह्यूज अल्लाह का क्रिएशन है और उनके भी 2 हाथ हैं, लेकिन ये फरिश्ता हमारा जैसा एक हाथ है, उसके 1000 हैंड्स थे, बाज़ रिवायतों में 10,000 है। एक आप इमेजिन करें वो कैसा क्रिएशन, 1 2 3 ऐसा 1000 हाथ, और हर हाथ में 5 फिंगर्स। इधर वो एक हाथ 1000 हैंड्स है, इधर 1000 हैंड्स है। मैं कोई रिवायत ऐसे नहीं कर रहा, हयात अल खुलूब और अल्लाह मजलिसी ने लिखा और बिहार में यह रिवायत मौजूद है, और तारीख़ इस्लाम में नजमुल हसन करारवी ने लिखा। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है। उसके 1000 हाथ थे, इधर 10,000, इधर 10,000, मतलब 1000 हाथ, 10,000 फिंगर, 10,000 फिंगर्स इधर, 10,000 फिंगर। अल्लाह का रसूल तो जानता था ये फरिश्ता क्या है। उसने सरकार को सलाम किया, अल्लाह के रसूल ने उसका जवाब सलाम दिया। जवाब देके कहा, तू क्या कर, तेरी ड्यूटी क्या है? इसलिए कि हर फरिश्ते की ड्यूटी है, ये नहीं कि फरिश्ता वहाँ पे खामोश बैठा हुआ है, नहीं, हर फरिश्ते की एक ड्यूटी है। कोई सलवात पढ़ा, कोई नमाज पढ़ा, कोई खुनूत पढ़ा, कोई ड्यूटी, मतलब डिफरेंट ड्यूटीज़ अल्लाह ने हर फरिश्ते को किया। किसी को अल्लाह ने अबस पैदा नहीं किया, अबस यानी वेस्ट पैदा नहीं किया, चलो चलता ये भी पैदा हो, ये भी क्रिएट कर दो, ये भी, नो। हर के पीछे एक मकसद है, ये याद रखो। एक छोटी जानवर, इवन एंट है, आप बोलेंगे एंट से क्या काम है? नहीं, एंट से भी अल्लाह कोई काम ले रहा। अगर एंट ना हो तो कोई दूसरी बीमारी हमारे पास आ जाए। हर छोटा जो बिल्कुल नज़र नहीं आने वाला क्रिएशन भी जो अल्लाह का है, उसके पीछे भी उसका मकसद है। अल्लाह ने किसी को वेस्ट पैदा नहीं किया, अबस पैदा नहीं किया। ये जहन में रखो। क्या रही इसका क्या फ़ायदा हो, इसका क्या फ़ायदा, नो, आप बोल ही नहीं सकते। इवन ये जो बर्ड्स है, ये सारे के सारे बर्ड्स, इनको भी अल्लाह ने किसी ना किसी काम के लिए पैदा किया, एंड दे आर डूइंग दैट ड्यूटी। तो ये हमारे पास, हम उस अल्लाह को मानते कि जो खालिक़ कायनात है, जो रब्बुल आलमीन है, जो रब्बुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन है, बहरहाल। तो इसने क्या किया, अल्लाह के रसूल ने इस फरिश्ते से पूछा कि तेरी ड्यूटी क्या है? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं जो अल्लाह की रहमत, प्लीज़ गौर से सुनो, जो अल्लाह की रहमत आसमान से नीचे आती है, जब से ये पैदा हुआ, जब से ये क्रिएशन हुआ, तो अल्लाह की रहमत आसमानों से नीचे आती है। और वो कहता है कि मैं एक एक ड्रॉप में, मैं आपको मिसाल दे रहा उसका, रेनफॉल का, पानी का, बारिश का, कहता है आसमान से जब बारिश नीचे आती है तो एक एक ड्रॉप का कैलकुलेशन मेरे पास है कि अब तक कितनी रहमत आसमान से अल्लाह ने ज़मीन पे नाज़िल की। मेरे कंप्यूटर, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा कि मेरे कंप्यूटर में सारी चीज़ें फीड है,
कि कितने ड्रॉप्स जमीन पे नीचे गिर रहे हैं आसमान से, कितने ड्रॉप्स, एक एक ड्रॉप का मेरे पास कैलकुलेशन है। अल्लाह ने कहा रसूल सरकार जानते थे, लेकिन कहा अच्छा एक एक ड्रॉप का। तो कहता है कि देखिए दुनिया में जब बारिश होती, ज़मीन पे जब बारिश होती, अमेरिका में जब बारिश होती, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर कोई नहीं लिखता कि इतने ड्रॉप्स आसमान से ज़मीन पर आए। क्या लिखेंगे? इतने इंच बारिश हुई, 4 इंच बारिश हुई, 5 इंच बारिश हुई, 10 इंचेस आज रेनफॉल था, ये लिखेंगे। साइंस भी आज नहीं बता सकती कि कितने ड्रॉप्स आसमान से आए, ये बताएगी कि कितना इंच बारिश हुई है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये इंच नहीं बोल रहा, ये बोलता है ड्रॉप्स ऑफ खतरे, पानी के खतरे, आसमान से जो रहमत के खतरे ज़मीन पे आते, वो उसका हिसाब मेरे पास है। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा, वो बड़ी बात, कहीं हैवी शावर्स है, कहीं स्लो है। जब हैवी शावर्स होते वो भी तेरे पास कैलकुलेशन है। उसने कहा ईच एंड एवरी ड्रॉप, और कब से हो रहा आज तक। आई कैन टेल यू कि इस दिन इतनी बारिश हुई, इतनी रहमत आई, इतनी। देखो दोस्तों अल्लाह कितना करीब है, सिर्फ रहमत को बरसाता है, सिर्फ रहमत को बरसाता है। अगर उसकी रहमत नहीं होती तो कोई जन्नत में नहीं जा सकता था, हम नहीं बच सकते थे। उसकी रहमत है जो आज हम बचे हुए हैं। ऑलवेज से थैंक यू टू योर अल्लाह, ऑलवेज से थैंक यू टू योर अल्लाह, कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। इसलिए कि उसका शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह अपनी रहमतों को और इजाफा करेगा। अब आप लॉस एंजलिस में बैठ के अल-असर इमाम बारगाह में मेरी मजलिस सुन रहे हैं, बेहतरीन अमल क्या है? सलवात पढ़ते रहो। खाली बैठ के आप मुझे जस्ट यू आर वॉचिंग मी और यू लिसनिंग मी, तो आप सलवात, जितनी तुम सलवात पढ़ते रहोगे, जितनी तुम सलवात पढ़ते रहोगे, मजलिस का सवाब भी अलग मिलेगा, सलवात का सवाब भी अलग मिलेगा। आपको कोई हिसाब करने की भी ज़रूरत नहीं। और सलवात के एक आपकी फजीलत बताऊँ, अगर रोज़ाना 100 टाइम्स आप सलवात पढ़ो, 100 टाइम्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज, पढ़ के अगर आप 9th इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम को गिफ्ट करो। इसलिए कि 9th इमाम के ज़रिए से अगर दुआ मांगते हो तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाज़े खोलता है। अगर किसी का रिस्क का दरवाज़ा बंद है, अगर किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, या जॉब है लेकिन बड़ा स्ट्रगल कर रहा, बिज़नेस है लेकिन बिल्कुल बिज़नेस हैंड टू माउथ है, हर बिज़नेस के लिए, हर जॉब के लिए अगर डेली 100 टाइम्स सलवात पढ़ के 9वें इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम को तुम हदिया करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत देता। बट इतनी बरकत होती कि तुम सोच भी नहीं सकते बरकत। बिजनेस जितने लोगों का बिजनेस है लॉस एंजलिस में, जो भी मुझे अल-असर पे सुन रहा, उनसे रिक्वेस्ट कि वेन एवर यू गो टू योर ऑफिस, वेन एवर यू गो टू योर बिजनेस, जस्ट अंदर जाने के बाद, ऑफिस में जाने के बाद, वेन यू सिट ओवर देयर, वहाँ बैठ के, और जब तुम एंटर हो, ऑफिस में एंटर हो, अपने बिजनेस में एंटर हो, तो सलवात पढ़ते हो। इतना ही ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए एंटर हो जाओ। गो टू योर कैबिन, सिट ओवर देयर और रिसाइट 100 टाइम्स सलवात। और सलवात पढ़ के किसको हदिया करो, किसको गिफ्ट करो? 9th इमाम को गिफ्ट करो। खाली 9th इमाम को गिफ्ट नहीं करो, बल्कि ये बोलो, प्लीज़ गौर से सुनना, ये बोलना कि परवरदिगार ये जो मैंने 100 टाइम्स सलवात पढ़ी है, मिसाल दे रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज, ये जो मैंने 100 टाइम्स सलवात पढ़ी है, अल्लाह ये सलवात ऑन बिहाफ ऑफ माई मरहूम फादर, मरहूम मदर और सारे मरहूमीन की तरफ से, बिहाफ ऑफ ऑल द मरहूमीज़। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने 100 मरतबा सलवात पढ़ के मरहूमीन को अगर आपने गिफ्ट कर दिया तो इसका सवाब क्या है। अब सुनो, 100 मरतबा 100 टाइम्स पढ़ के आप एक सलवात से 10 लोगों का फ़ायदा ले सकते हैं। पहले आपने कहा कि ये सलवात को मैंने गिफ्ट किया है इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम को, 9वें इमाम को, कि बोला मेरे रिस्क में दरवाजे, मेरे रिस्क के दरवाजे खोल दे। इसलिए कि 9th इमाम का लक़ब है जवाद, नाम है मोहम्मद, लक़ब है जवाद। जवाद के माने है बेमांगे अता करे, बेमांगे, जो सिफत अल्लाह की है वो सिफत इस मासूम की। वैसे हर इमाम देता है, लेकिन रिस्क के लिए अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरे 9वें वारिस का वास्ता दे के दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाज़ों को खोल देगा, रिस्क में तुम्हारे बरकत देगा। तो आपने पहले गिफ्ट करना है 9वें इमाम को उनके रिस्क में बरकत के लिए। उसके बाद ये जो सलवात, अब आप चाहते हैं कि आपकी दुआ और जल्दी कबूल हो, आप ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे और ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे कि जो मजबूर है, जो नहीं पढ़ सकते, जो मनो खाक के नीचे है, जो सबसे पहले जो तुम्हारे ऊपर हक़ है जिसके लिए पढ़ना है वो तुम्हारे माँ बाप है। तो अगर जिसके माँ बाप ज़िंदा है
उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि इस सलवात की बरकत से तो मेरे माँ और बाप को सलामत रख, ये सलवात की बरकत से मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख, ये सलवात की बरकत से इमाम ज़माना की सलामती के सदक़े में मेरे माँ बाप को सलामत रख, मोमिनीन मोमिनात को सलामत रख। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि आप ये सलवात की बरकत से अल्लाह दुनिया में जितने बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। उसके बाद बोलो कि अल्लाह जिसकी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है पूरी दुनिया में, उसको मैं ये सलवात का तोहफ़ा दे रहा, इसलिए कि मरने के बाद नीचे मरने के बाद सारे मुर्दे, उनको क्या चाहिए? तुम्हारे बाप मर गया, तुम्हारी माँ मर गई, व्हाट दे नीड ओनली रहमत, दे नीड ओनली ब्लेसिंग, व्हाट दे नीड डाउन, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, ना गोल्ड चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना डॉलर चाहिए, ना कुछ चाहिए। व्हाट दे नीड ओनली द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, रहमत ऑफ अल्लाह, रहमत। और रहमत को नाजिल करने के लिए इससे बेहतर कोई अमल नहीं, इससे बेहतर कोई अमल नहीं। अगर आप रहमत को नीचे भेजना चाहते तो इससे बेहतर कोई अमल नहीं कि तुम सिर्फ सलवात पढ़ के उनके ऊपर रहमतों को नाजिल करो। तो तुम क्या बोलो कि अल्लाह, प्लीज़ गौर से सुनना, कि अल्लाह जितने मरहूमीन हैं, जिसमें मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, सारे मरहूमीन के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज मरहूमीन मैं ये सलवात पढ़ रहा, इसकी रहमत तो उन तक पहुँचा है। दोस्तों, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करने में जल्दी करता, बहुत जल्दी करता, लेकिन अजाब नाजिल करने में जल्दी नहीं करता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हम नमाज क़ज़ा करते, अल्लाह हम पर अजाब नाजिल नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे। हमको मौका देता, बोलता कि वो माफ़ी मांग लो, जस्ट से सॉरी टू मी, आई विल फॉरगिव यू, जस्ट से सॉरी। लेकिन ये वही बार बार ये भी बोलता कि मैं तो सॉरी तुम बोलोगे तो मैं तो फॉरगिव करूँगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल्सो कि तुम भी किसी को माफ़ करो। चेक करो, आज चौथी मजलिस है अल-असर की, 4th मजलिस है, चेक करो कि तुम किसी से नाराज़ तो नहीं है, तुम्हारे भाई से, तुम्हारी बहन से, तुम्हारे कज़न से, तुम्हारे रिश्तेदार से नाराज़ तो नहीं है। बेहतरीन आमाल, इफ़ यू रियली वांट टू जॉइन द आर्मी ऑफ इमाम, तुम्हारे पास ये सिफत होनी चाहिए। यू शुड हैव दिस क्वालिटी कि तुम फॉरगिवनेस तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये चीज़ को पता कर लो, तुम कामयाब इंसान हो जाओगे, तुम मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन होगे, जिससे मौला राजी होगी। फॉरगिवनेस सबसे, इंशाल्लाह कल इस पे बोलूँगा टोटल फॉरगिवनेस के फॉरगिवनेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज तो मैंने छेड़ा है, तो अब मैं रहमत की सलवात की बात कर रहा हूँ। तो आप बेहतरीन अमाल में से सलवात, अब जैसे औरतें बैठ के मुझे सुन रहे, आप आराम से बैठ के सलवात पढ़ो, खामोश पढ़ते रहो, और खुद भी पढ़ो, बच्चों से रोज़ 5 दफ़ा पढ़वाना, अपने छोटे बच्चों से, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल बच्चों को बोले बेटा जस्ट रिसाइट 5 टाइम्स सलवात, बेटा जस्ट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा, जस्ट बेटा से 5 टाइम्स। और बच्चा खुश खुश बोलेगा, जैसे तुम एग्ज़ाम्स का पढ़ाते, जैसे तुम स्कूल का पढ़ाते, उसी अंदाज से तुम ये भी पढ़ाना कि बेटा जस्ट से 5 टाइम्स सलवात। आप सोचो, अगर बच्चा बोले, मासूम बच्चा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको वो सवाब। दूसरा, आपने कहा, बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजो, जैसे ही कहा कि अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल। मेरी ज़बान नजिस है, मैंने बहुत ग़ीबत की है, मैंने बड़ा झूठ बोला है, मैंने इस ज़बान से बड़ा गुनाह किया है, मैंने इस ज़बान से लोगों को हर्ट किया। लेकिन वो मासूम बच्चा, उसकी ज़बान तो पाक है, उसने ना झूठ बोला, उसने ना ग़ीबत की, उसने ना बैक बैटिंग की, उसने ना किसी को हर्ट किया, मासूम है। मासूम बच्चा अगर बोले अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाजिल कर, यू कैन इमेजिन कैसे रहमत नाजिल होगी। जब उनके ऊपर रहमत नाजिल होगी तो मासूम इमाम, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम बोले, बीबी बोले कि अल्लाह इस पर भी रहमत नाजिल कर, उस मासूम बच्चे पे जो रहमत आएगी वही रहमत आपके ऊपर आएगी, बिकॉज तुम ज़रिया बने, तुमने उसको एडवाइस किया, वो तुम्हारी औलाद है। बेटा नेकी करता, माँ बाप को फ़ायदा होता, बेटे के ऊपर रहमत आएगी। तुमने बच्चे को सिखाया कि तुम सलवात पढ़ो, तो बच्चे ने सलवात पढ़ी, तो तुम्हारे ऊपर भी उतनी रहमत आ गई जितने रहमत बच्चे पे आई। कैसे रहमत आती है वो अभी मैं उस फरिश्ते के वाक़े से बताता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। तो मासूम बच्चों को बताओ डेली एवरी डे, ये प्रैक्टिस कर लो,
ये मस्त कर लेना हर घर में। अगर लॉस एंजलिस के हर घर में, लॉस एंजलिस के हर घर में 5 सलवात, मिसाल दे रहा मैं 5, आप 100 पढ़ो, मैं 5 बोल रहा हूं, मैं ज्यादा लंबा होमवर्क नहीं दे रहा, 5 सलवात खाली। मासूम बच्चा, अब बच्चों की प्रैक्टिस, जैसे सुबह में उठ के बच्चे आपको बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हाय डैड, हाय मॉम, आप बोलते हैं सलाम अलैकुम, ये बोलते हैं ना, बस उसी तरह ये भी करो, कभी भी करो, 24 आवर्स में कभी भी करो। जब बच्चा स्कूल जा रहा, आप कार में ड्रॉप करने जा रहे, तो बच्चों को बोलना बेटा जैसे रिसाइट, 2 बच्चे, बेटा रिसाइट 5 टाइम्स सलवात लाउडली, तो बच्चे कार में बैठ के बोलेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फर, वो लोग लाउडली बोलेंगे, तो रहमत खुदा भी लाउडली आएगी, रहमत खुदा भी फ़ौरन पहुंच जाएगी। और मैं बार बार ये जुमला बोल रहा, आप ये समझो कि अल्लाह रहमत नाजिल करने में देरी नहीं करता, 1 सेकंड की देरी नहीं, वो खुश होता, कितना करीम है, कितना मर्सीफुल है, कितना मर्सीफुल है। अल्लाह से बड़ा कोई मर्सीफुल नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई मर्सीफुल नहीं, वो इतना मर्सीफुल। हम गुनाह करके भी जाके बोलते अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मी, तो वो मुझे माफ़ कर देता। तो सलवात, आप सोचो कार के ऊपर रहमत आ गई, कार के ऊपर रहमत आ गई, तो तुम्हारी कार प्रोटेक्टेड होगी। खुदा ना खास्ता आ गया एक्सीडेंट है, मुझे नहीं मालूम, मैं घर से तो बिल्कुल सही निकला, मैं घर से तो सही निकला, हो सकता है कि मेरी गाड़ी ख़राब होने वाली है आगे जाने के बाद, हो सकता कोई एक्सीडेंट होने वाला है, हो सकता कोई प्रॉब्लम आने वाला है, मिसाल दे रहा मैं, तो रहमत खुदा स्टार्टिंग में ही आ गई, आई रहमत आने के बाद फिर क्या कोई मुसीबत आती है? मैं पूछ रहा आपसे, रहमत आने के बाद क्या कोई मुसीबत आती है? फिर कोई मुसीबत नहीं आती। रहमत अगर आ गई तो सिर्फ रहमत है, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। तो बेहतरीन आवाज, जब तुम गाड़ी में ड्रॉप कर रहे तुम सलवात पढ़ो, 1 पढ़ाओ यार, 1 पढ़ाओ तो बच्चे की जबान से तो निकले। वापसी में आप लेके आ रहे बच्चों को, अब बच्चों को बोले बेटा प्लीज फॉर मी रिसाइट 5 टाइम्स सलवात। तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, रोज तुम 5-6 दिन 1 हफ्ता पढ़ाओगे, 1 हफ्ते तक तुमको बोलना पड़ेगा। 1 हफ्ते के बाद यू जस्ट कीप क्वाइट एंड सी कि गाड़ी में बैठते बच्चा सलवात पढ़ेगा, आदत हो जाएगी, उसकी आदत हो जाएगी। 1 हफ्ते तक आप मेहनत करो, 1 वीक। मेहनत भी क्या है, इसमें आपको खाली बोलना है कि बेटा रिसाइट सलवात 5 टाइम्स, अब बेटा सलवात पढ़ा। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद तुम खामोश बैठ जाओ और तुम उसको बोलो, देखो बच्चा खुद सलवात पढ़ेगा। और सलवात इतनी बड़ी नेमत मिली है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये सलवात, कि अगर आपको मालूम हो जाए, मैं तो बहुत कम बोल रहा, अगर सलवात की रहमत, सलवात की बरकत अगर इंसान को मालूम हो जाए तो 24/7 सिर्फ वो सलवात पढ़ता रहेगा। इतनी रहमत है। जो सलवात पढ़ता है वो कभी अंधेरों में नहीं रहता, वो रोशनी में रहता, ब्राइटनेस में रहता। और ये सलवात हियर एंड हियर आफ्टर तुमको फायदा पहुंचाएगी, हियर एंड हियर आफ्टर फायदा पहुंचाएगी। इस दुनिया में भी तुम्हारे ऊपर रहमत है, ऐसा रहमत तुमको घेर लेती। अब आप सुनो इसका फायदा और फायदा बताता। तो अब कार में बच्चों को सिखा, डेली बच्चे पढ़ना आपकी चिल्ड्रन, तो इससे आपके घर में भी रहमत। और जब भी आप बच्चों को बोलो, जब भी घर में एंटर हो, डाइनिंग टेबल पे बैठे, प्लीज़ जब आप उनको फूड दे रहे, माँ स्कूल से आने के बाद उनको खाना देती, डाइनिंग टेबल पे बच्चे बैठ के उनके सामने खाना रखा हुआ है, तो बच्चों को बोलो बेटा जस्ट रिसाइट 1 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फर, देन स्टार्ट फूड। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जहां जहां मैंने ये बताया, लोगों के हालात बदल गए, लोगों की जिंदगी बदल गई। यू विल नॉट बिलीव जो फायदा है इस सलवात का, ऐसा फायदा, रहमत खुदा ऐसे नाजिल होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब इंसान, दोस्तों हमको कुछ नहीं मालूम है कि आगे इस दीवार के पीछे क्या है, वी डोंट नो, वी डजंट नो एनीथिंग, कि कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आने वाला है, खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ आने वाली है, खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आने वाली है। मैं आपको बोल रहा हूँ, खुदा ना खास्ता क्या है, आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, लास्ट डे ऑफ माई लाइफ है, हमको मालूम है? मैं बोल सकता नो, आई एम गोइंग टू लीव 1 more year,
कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। यू कांट से। कोई गारंटी है क्या? बोलेगा नहीं आई एम गोइंग टू लिव 1 more year। एक दिन, 1 घंटा की गारंटी नहीं है, 1 मिनट की गारंटी नहीं है, 1 मिनट की गारंटी नहीं है कि मैं 1 घंटा, मैं और 1 घंटा रहूंगा। अगर रह गया तो उसका करम है, उस करीम परवरदिगार का करम है। अगर मर गया तो उसकी मर्जी है, वो जब चाहे बुला सकता। वो हमारा मालिक है, ही इज अवर मालिक, ही इज रब्बुल आलमीन, ही इज रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन। तो ये सलवात जो है, ये सलवात जो है तुम्हारी जिंदगी को ऐसा बढ़ा देती। आप चाहते हैं कि जिंदा रहे? कौन नहीं चाहता जिंदा रहने का? जब रहमत आएगी, जब आप दुआ करेंगे सलवात अल्लाह, और इसमें हमेशा याद रखना, बच्चों के लिए नहीं बोल रहा मैं, आपके लिए बोल, आप नियत कर सकते बच्चों की तरह, आपके बच्चे, कि ये जो मेरे बच्चों से मैं सलवात पढ़वा रहा, ये सारे मरहूमीन के बिहाफ में पढ़वा रहा। अगर किसी के माँ बाप जिंदा भी हैं तो ठीक है, लेकिन जितने मरहूमीन हैं मैं उनको, उनके बिहाफ में कि अल्लाह ये सलवात का सवाब उनको दे दे। जब आप बोलते किसी और को दे दे, तो आप ये जहन में मत रखो ओ इफ आई, मैं उनको दूंगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। नहीं, ऐसा नहीं है। डोंट थिंक, ऐसा नहीं सोचना कि अरे मैंने कहा कि वो मरहूम को दे दे, मेरे मरहूम बाप को दे दे, देन व्हाट मी, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट मोर देन यू आर एक्सपेक्टिंग। इसलिए कि अल्लाह बोलता है कि जब तुम दूसरों के लिए करेंगे तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। अल्लाह एक ही चीज की तरफ हमको वो कर रहा कि टेक केयर ऑफ अदर पीपल, टेक केयर ऑफ अदर, हर वजह से मरने वालों के और ज्यादा मरहूमीन के लिए करना। क्यों? इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि जो जिंदा है आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे। नो 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 नो, ये कभी नहीं करना। हर इंसान की हेल्प करना। इवन एक छोटे से जानवर की तुम हेल्प करोगे, चूंटी की, एंड की तुम हेल्प करोगे, उसका रिस्क डालोगे, तो वो भी जो है तुमको इसका अजर अजीम अता करेगा। तो ये कभी मत सोचो। हमेशा क्या करना कि इंसान को ये चाहिए कि सलवात, जब भी सलवात, एक सलवात पढ़ो 100 मरतबा पढ़ो। ये सलवात का सवाब मेरी माँ को दे दे, मेरे बाप को दे दे, मेरे भाई को दे दे, मेरी बहन को दे दे, सारे मरहूमीन को दे दे। जब तुम ये बोलते ना सारे मरहूमीन को दे दो, तो वो सारे मरहूमीन आपकी जिंदगी की दुआ करते हैं। कैसे लगा आपको ये बात? सारे मरहूमीन, इवन योर मदर, योर फादर, दे प्रे फॉर योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी के लिए दुआ करेंगे। क्यों दुआ करेंगे? यही चीज नमाज शब के लिए है। नमाज शब में भी यह कि जो इंसान नमाज शब कसरत से पढ़ता, रोज पढ़ता, उसकी जिंदगी अल्लाह बढ़ाता जाता, उसकी जिंदगी अल्लाह बढ़ाता जाता नमाज शब पढ़ना। इसलिए कि वो मरहूमीन दुआ करते कि अल्लाह इसको जिंदा रख के ये रोज शब नमाज पढ़ के हमको दिया दे। दुआ करने में कोई दुआ तो कभी भी कर, और अल्लाह सबसे ज्यादा, अल्लाह को पसंद है वो दुआ है। सबसे ज्यादा जो अल्लाह को पसंद है वो दुआ है। उसी तरह ये नमाज सलवात, जब तुमने मरहूमीन के लिए कहा, एक ही सलवात की बात कर रहा, एक सलवात आप 100 मरतबा पढ़ के दो, तो जब आप, तो मरहूमीन तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि अल्लाह इसकी वजह से रहमत मेरे पास आई, अल्लाह जस्ट बिकॉज ऑफ हिम वी गॉट दिस रहमत, अल्लाह तो इस पर भी रहमत करना सिर्फ। आप सोचो, आप सोचो, यू कैन इमेजिन कि हजारों मोमिनीन ने तुम्हारे लिए रहमत की दुआ की। वो इतना करीम है, वो बोलता तुम, एक आदमी दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल करता, एक आदमी दुआ करेगा वो दुआ कबूल करता। लेकिन अगर हजारों लोगों ने तुम्हारे लिए दुआ की कि अल्लाह इस पर रहमत नाजिल कर, तो मौत आएगी, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होगा, कोई तकलीफ होगी। याद रखो जिंदगी में हमेशा, जहां रहमत है वहां मुसीबत नहीं है, जहां रहमत है वहां पे मुसीबत नहीं है। एक सलात पढ़ ले, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। जहां रहमत है फिर वहां पे मुसीबत है। सिर्फ रहमत ही रहमत, और दुआ एक ही चीज की मांगना कि अल्लाह तेरी ब्लेसिंग चाहिए, अल्लाह तेरी रहमत चाहिए। और जब रहमत खुदा आती है दोस्तों, तो वो इतना करीम 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 है, वो गैर हिसाब अता करता, वो हिसाब नहीं करता, वो देता है। ये नहीं देखता कि ये कितना गुनाहगार है, इसने कितना मेरे साथ मिसबिहेव किया, अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन वो करीम इतना है। यह मासूम का जुमला है, मासूम का जुमला है कि अगर अल्लाह
अगर अल्लाह करीम नहीं होता, अल्लाह रहीम नहीं होता, अल्लाह गफूर रहीम नहीं होता, अल्लाह अगर अरहमर राहिमीन नहीं होता, तो कोई इंसान जन्नत में नहीं जा सकता था। उसने अपनी ज़ात के ऊपर रहम को वाजिब कर लिया। रहम को वाजिब करने का नतीजा ये हुआ कि उसने सबको बख्श दिया, सबको बख्श दिया। तो बच्चे को, बेटे को, बेटी को कार में बैठते ही, अब आज से कल सुबह में जब बच्चों को स्कूल छोड़ना या बच्चों के साथ कहीं जाना, बैठते ही सबसे पहले ये बोलना, बेटा जस्ट रिसाइट 1 टाइम सलवात। सब बच्चे खुश खुश पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फर्ज। कितना सवाब, कितना सवाब। कार में, डाइनिंग टेबल पे, मैंने माओ को यह होमवर्क दिया है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना, अगर तुम अकेला भी बच्चा बैठा है, तुम प्लेट में उसको खाना सर्व कर रहे, वो बिफोर यू सर्व और बिफोर ही स्टार्ट्स जस्ट से कि बेटा रिसाइट जस्ट 1 सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर कोशिश करो बुलवाने की, कि बहुत सवाब है, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का भी सवाब है और सलवात का भी सवाब है। 2 सवाब तुमको एक साथ मिलते हैं। हर बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आता है, तो आप बोलो कि बेटा जस्ट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो खुश खुश बोलेगा, वो अपनी मीठी ज़बान में बोलेगा। फिर आपने कहा कि से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फर्ज, और इसका सवाब आपका फ़ायदा बताता। सलवात हो गई, बच्चे ने सलवात पढ़ ली कि अल्लाह तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल कर। आप यू कैन इमेजिन एक मासूम बच्चा अगर आपको आके लॉस एंजलिस में बोले, लॉस एंजलिस में एक मासूम बच्चा 4 ईयर्स 5 ईयर्स ओल्ड बॉय आके बोले कि अंकल आपके ऊपर अल्लाह रहमत को नाजिल करे, अल्लाह आप पे रहो, तो तुम कितना खुश हो जाओगे, कितना खुश होगे। तुम भी बच्चे के सर पे हाथ रख के बोलोगे, बेटा अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहमत नाजिल करे। आप इमेजिन करो, इमेजिन करो, अगर ये मासूम बच्चा बोल रहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फर्जहम, ज़माने का इमाम मौला 14 मासूमीन कितना खुश होंगे कि ये मासूम बच्चा हमारे लिए रहमत की दुआ करे। बीबी कितना खुश होंगी अगर बीबी बोल दे, मेरी मजलूम शहजादी बोल दे कि अल्लाह इस पर भी रहमत आया। रहमत ही रहमत है। आप एक सलवात पढ़ के अपनी तकदीर को बदल सकते। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी विद 1 सलवात, विद 1 सलवात यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। कितनी बड़ी बात। आप इमेजिन करो व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग कि एक सलवात से इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल बोले कि अल्लाह इस बच्चे ने मेरे लिए इस रहमत की दुआ की, दे डोंट नीड इट, लेकिन आपकी मोहब्बत कि मासूम बच्चे ने बोला कि अल्लाह इस पर रहमत नाजिल कर, तो अल्लाह का रसूल बोलते जो वमा अरसलना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन का मिज़दाक़ है, वो खाली हाथ फेर दे रहमत का, तो हमारी पूरी ज़िंदगी, आपका बिजनेस लॉस एंजलिस में इधर चले जाएगा। डू दिस, सलवात कसरत के साथ सलवात पढ़ो। और इसका फ़ायदा उसके बाद अगर वो मासूम बच्चा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बोला, उसके बाद वह अज्जिल फ़रजहुम बोला। वह अज्जिल फ़रजहुम बच्चों को ज़रूर सिखाओ। जब वो बोलेगा वह अज्जिल फ़रजहुम, ज़माने का इमाम कितना खुश होगा, ज़माने का इमाम फ़र्जंद मज़लूम बीबी ज़हरा कितना खुश हो जाएंगे, हमारा सैयद, हमारा सरकार, हमारा सरदार कितना खुश होगा। वो बोलेगा अच्छा इस मासूम बच्चे ने मेरे ज़हूर की दुआ की। आप जानते कि मासूम बच्चों की दुआ जल्दी कबूल होती। दुआ का भी तरीक़ा, अगर मासूम बच्चा तुम्हारे सामने हाथ उठा दे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दे, ऐसा खाली छोटे छोटे हाथ हैं उनके, छोटे छोटे हाथ बच्चों के हाथ में सिजदेगा दो। और बच्चों अगर तुम खुदा ना खासा कोई इंसान परेशान है तो ऐसा सिजदेगा दे के बोलो बच्चों को कि सिर्फ सलवात पढ़ के दुआ कर दो। अगर किसी मासूम बच्चे ने हाथ उठा, इसकी डिटेल बताऊंगा ने कल परसों के मजलिस में, हाथ रखते और कहे कि परवरदिगार तू रहमत को नाजिल कर, तो मासूम बच्चा, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरे हाथ गुनाह किए के हाथ हैं, ये सारे के सारे हाथ गुनाह मैंने किया इन हाथों से, मेरे हाथ नहीं है वैसे, लेकिन अगर मासूम बच्चा वो अपने हाथों को उठा दे तो अल्लाह अपनी रहमत को फ़ौरन नाज़िल। वो बोलता कि मेरी बारगाह में, मेरी मखलूक में एक मासूम ने मेरे हाथ
मेरी बारगाह में बुलंद किए। अब इसकी वजह से बच्चों की तरफ से माँ बाप के ऊपर रहमत आई, बच्चों की तरफ से तुम्हारे घर पर रहमत आई। जिस जगह पे बैठ के बच्चे दुआ कर रहे हैं उस जगह पे अल्लाह की रहमतों को नाजिल होता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। 45 मिनट्स की मजलिस होती अल-असर इमाम बारगाह में और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए। अभी मैंने वो वाक़या भी कंप्लीट नहीं किया, अल्लाह के रसूल का मेराज का। वो वाक़या मैं कल इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करूँगा, इसी सलवात को कंटिन्यू करूँगा। नुसरत इमाम में ये बेहतरीन आमाल में से एक अमल है कि आप कसरत के साथ सलवात पढ़ो। इंशाल्लाह मैं ये वाक़े को कल कंप्लीट करूँगा। कल की भी वेरी इंपॉर्टेंट मजलिस, मेरी 5th मजलिस अल-असर इमाम बारगाह लॉस एंजलिस की। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे आप सबको। 4 मुहर्रम की मजलिस है, शब 5 मुहर्रम की ये मजलिस है। दोस्तों 4 दिन पूरे गुजर गए। ये दिन तो ये अय्याम तो सिर्फ गिरिया के अय्याम, रोने के अय्याम। मौला हुसैन करबला आ गए, 2 दिन गुजर गए आके। 2 मुहर्रम को आए थे मौला, 2 दिन गुजर गए। अब कितने दिन बाकी रह गए? आज 4 मुहर्रम की रात आ गई, कल 5 है, फिर 6, फिर 7 आएगी। क़यामत का दिन आ जाएगा कि मेरे मौला हुसैन के छोटे छोटे बच्चे, मौला हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हो जाएंगे। दोस्तों कितनी जल्दी ये दिन गुजर जा रहे। बस मेरी बीवी कबूल करे हमारी अज़ा को, बीवी कबूल करे, हम गुनाहगार हैं। दोस्तों आज हम जिंदा हैं सिर्फ अज़ा की वजह से। और पूरी दुनिया में 5-4 मुहर्रम की रात को 2 शहजादों का जिक्र होता, 2 हुसैन के, बीबी ज़ैनब के बच्चों का जिक्र, उस माँ के बच्चों का जिसने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। जब मातम किया कभी अली अकबर का, कभी अब्बास का, कभी मौला हुसैन क़ासिम का, शहजादे अली असगर का, बीबी सकीना, बीबी ज़ैनब कुनबे की रोने वाली थी, पूरे कुनबे की रोने वाली मेरी शहजादी थी। हर बीबी का गम बीबी का गम था, हर गम बीबी का था। दोस्तों मेरी शहजादी के ये 2 बच्चे थे, औन और मोहम्मद, लेकिन माँ ने इन बच्चों का मातम नहीं किया। मौला हुसैन कहते हैं कि शब आशूर मैं एक खैमे में जा रहा था, जनाब लैला के खैमे में गए तो देखा कि एक चिराग जल रहा। अली अकबर माँ के जानू पे सर रख के लेटे हुए और माँ जुल्फ़ों को सवार के कह रही कल ये चांद सा चेहरा खून खाक में मिल जाएगा। रबाब के खैमे में गए तो देखा कि माँ रबाब झूले के पास अपनी पेशानी को रख के रो रही है और कह रही कि अली असगर कल हर माँ अपनी कुर्बानी देगी, बेटा तुम इतने छोटे हो कि तुम मैदान भी नहीं जा सकते। मैं हाथों को जोड़ के बोलूँ मेरी बीवी रबाब, आपका बेटा वो जंग करेगा कि लोग अली अकबर की जंग भूल जाएंगे। क़ासिम के खैमे में गए तो बीवी उम्मे फरवा बैठ के शहजादे क़ासिम से बात कर रही और कह रही बेटा देखो मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, रोज़े महशर बीबी फातिमा को सूरत बताना है। हर बीबी अपने अपने लाल को सामने रख के तैयार कर रही है अपनी कुर्बानी को। लेकिन जब शहजादी ज़ैनब के खैमे में गए तो देखा कि औन और मोहम्मद बैठे हुए हैं और बीबी इमाम अली अलैहिस्सलाम की और जनाब जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की जंग के वाक़यात बयान करके बच्चों को बूस्ट कर रहे कि देखो बेटा तुम्हारे दादा ऐसे जंग करते थे, तुम्हारे नाना इस्लाम के लिए इस तरह लड़ते थे और कल का दिन क़यामत का दिन है, कल जाना इस्लाम की हिफाजत के लिए कल जाना। बस दोस्तों सुबह हुई, बार बार जब अंसार शहीद हो गए, क़ासिम का लाशा पामाल हो गया और मोहम्मद बार बार कह रहे हैं मामू हमको इजाज़त दीजिए, हुसैन इजाज़त नहीं देते। शहजादे खैमे में आए तो बीबी
बीबी ज़ैनब ने कहा बच्चों अभी तक गए नहीं, तो कहा मामू हमको इजाज़त ही नहीं देते, हम जब भी पूछते वो कहते कि अरे ये तुम तो मेरी बहन की निशानी हो, तुम तो मेरी बहन की निशानी हो। बस दोस्तों, औन का हाथ और मोहम्मद का हाथ, शहजादी ज़ैनब ने एक हाथ से औन को पकड़ा, एक हाथ से मोहम्मद को पकड़ा। दोनों बच्चों को लेके जब हुसैन के करीब आई तो मौला हुसैन ने दूर से देख के कहा बच्चों माँ को सिफारिश कराने लाए हो। अरे दोनों बच्चों को इजाज़त मिली, बस मैंने मजलिस ख़त्म कर दी, दोनों बच्चों को इजाज़त मिली। अजीज़ों, जब ये बच्चे चलने लगे तो दोनों औनो मोहम्मद को शहजादी ज़ैनब ने क़ैमे के दरवाजे पे रोका। बच्चों ने माँ को खुदा हाफिज़ कहा। कैसे कहा होगा? माँ को खुदा हाफिज़ कहा। कहते हुए बीबी ज़ैनब ने कहा देखो औनो मोहम्मद, मेरे बच्चों मैं जानती हूँ तुम भूखे और प्यासे हो, लेकिन लड़ते हुए नहर की तरफ रुख नहीं करना। ये तसव्वुर रहे कि झूले में अली असगर प्यासा है, अरे सकीना प्यासी है। बस दोस्तों, ये अली के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, खूब जंग की, अब मौला अब्बास के शागिर्द हैं, जंग खूब की, जंग लड़ते लड़ते कब तक लड़ते जब हर तरफ से हमले होने लगे, ये अली के नवासे घोड़ जख्मों से चूर होके दोनों शहजादे घोड़े से जमीन पर आए और कहा आका हमारा सलाम। मौला हुसैन, मौला अब्बास और जनाब अली अकबर मैदान में गए, और जब गए तो बच्चों की थोड़ी सी जान बाकी थी। बस दोस्तों, हुसैन ने इन बच्चों के सर को जानू पे रखा, जख्मों को साफ करने लगे। और मोहम्मद ने कहा मामू ये बताओ हमारा रुख किधर है? तो इमाम ने कहा बच्चों तुम्हारा रुख नहर की तरफ नहीं है। तो शहजादों ने कहा मामू जाके अम्मा को बोल देना कि हमने नहर का रुख नहीं किया। बस दोस्तों, दोनों लाशें उठाई गई और जब क़ैमे में आए तो बीवियों में कोहराम मच गया। ज़ैनब ने सजदा शुक्र अदा किया, कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है, मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले, मेरे भैया को बचा ले। कभी ज़ैनब ने और मोहम्मद का मातम नहीं किया, जब मातम किया अली अकबर और अब्बास हुसैन का, कासिम का, बस एक मौका आया था जब मदीने में अपने घर गई थी और मदीने के बच्चों ने पूछा था बीबी और मोहम्मद कहाँ है। अरे जब घर पहुंची तो बच्चों के रहने की जगह देखी, माँ का दिल था फट गया। करबला का रुख करके कहा अब्बास, करबला का रुख करके कहा और मोहम्मद अरे तुम लोग कहाँ हो बेटा? माँ जिंदा बगैर तुम्हारे कैसे रहे? इलाही व सैयदी वो बोला है परवरदिगार, मेरे शहजादे और मोहम्मद का वास्ता, मेरी शहजादी ज़ैनब के बच्चों का वास्ता, हमारी ये मजलिस कबूल कर ले। अल्लाह सर इमाम मरगा की परवरदिगार, जिन जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया आज की मजलिस को, उनकी रिस्क में बरकत दे, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार, ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए, तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। दुनिया में जितने बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार, जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया करके रोशन कर दे। मेरे मालिक, फ़र्जंद मज़लूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम को सलामत रख, इमाम की सलामती के सदक़े में सबको सलामत रख इंशाअल्लाह। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। नस्लों में मौला अल्लाह की वहदानियत और मौला हुसैन का जिक्र है, हमारे मजलिसों को कबूल कर ले। एक सूरह फातिहा जिन्होंने भी आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया है उनके लिए पढ़ दे। मोमिन जमात के सारे हमारे ताहिर मोमिन भाई, कुमैल भाई के वालिद के लिए पढ़ दे। जमी मोमिन मोमिनात, और एक मोमिन का इंतकाल हुआ है सैयद सलीम हैदर नकवी, उसके लिए भी सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह। या हुसैन, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein. देख मेरे गाजी, ऊंचा है अलम तेरा। देख मेरे गाजी, ऊंचा है अलम तेरा।
दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। ज़ैनब की दुआ बनकर एक वक्त वो आएगा। ज़ैनब की दुआ बनकर एक वक्त वो आएगा। हर घर में सजा होगा अब्बास अलम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। आ जाती है ज़हरा भी ज़ैनब भी ज़ियारत को। आ जाती है ज़हरा भी ज़ैनब भी ज़ियारत को। जब 8 मुहर्रम को उठता है अलम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। ताबूत जब उठता है शब्बीर का गाजी। ताबूत जब उठता है शब्बीर का गाजी। ताबूत के आगे भी चलता है अलम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। वो कौन से सदमे थे शह टूट गए जिससे। वो कौन से सदमे थे शह टूट गए जिससे। एक दर्द था ज़ैनब का और दूसरा गम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। परचम का फरेरा था या आस थी ज़ैनब की। परचम का फरेरा था या आस थी ज़ैनब की। ज़ैनब के कलेजे से गम कैसे हो गम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। बाजार में जिंदा में दरबार में हर लम्हा। बाजार में जिंदा में दरबार में हर लम्हा। ज़ैनब की तो सांसों पे हर नाम रकम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा।
आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा या हुसैन 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 Dua Faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi azum al bala wa barih al khafa wan kashaf al ghita wan kata ar raja wa zakat al arzo wa mani'at al sama wa anta al musta'anu wa ilayka al mushtaka wa ilayka al ma'awalu fi shiddati wa rakha
اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل Zart Imam Hussain. Assalamu alaikum ya Abu Abdullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya Ibn Rasulullah. Assalamu alaikum ya Ibn Amir al-Mu'mineen. Assalamu alaikum ya Ibn Fatima Zahra. Assalamu alaikum ya Abu Fazl Abbas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zart Imam Ali ibn Musa Rida. Assalamu alaikum ya Gharib al-Ghurba. Assalamu alaikum ya Ali ibn Musa Rida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zat Imam Hadi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjah. Assalamu alaikum ya Sahib al-Asr wa Zaman. Assalamu alaikum ya Imam al-Insi wal Jan. Assalamu alaikum ya Sharik al-Quran. Al-Aman, Al-Aman, Al-Aman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjah. Maulana, before we get to the Fatihas, please join us in person for the Mehendi, the night of December Muharram. We have a Hazri and Dusty Khan the following night of 8th Muharram in person, so please attend. Lastly, there's going to be in-person Amal, Jalus, and preparation for Fakr Shikni on Thursday, the day of Ashura. And then there's going to be a program that following night. Please RSVP one of the volunteers or Kamal Bhai. And let's do a Surah Fatiha on behalf of the parents of Anwar and Maryam Abbas, Manawar Abbas, Marum Tar Momin, Marum Heather Charinya, and Ibrahim Qasim Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farjum. Also, there's a request for Dua Shifa for Brother Ali Reza and Turab Ali. So let's go ahead and do Ummah Yujibu about 7 times. Assalamu alaikum Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibu mustarra dada wa yakshfasu. 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 Amma yujibul mustarrada wa yakshfasu. Amma yujibul mustarrada wa yakshfasu. Amma yujibul mustarrada wa yakshfasu. Salam. And we forgot the Dua Hujjat, so Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyaka al-Hujjat al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتع فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.